Good afternoon, everyone. Good afternoon. Bank Nifty फटने वाला है, किस साइड फटेगा बताइए. Good afternoon, sir. Have a profitable day. Make all profit, please. Having loss of 5k. Definitely, we will try our best. Arpit sir is already here. We'll start the session in next couple of minutes. Good afternoon, everyone. I hope I'm clearly audible and visible to everyone. अब chat में लिख सकते हैं yes. Okay, great. Thanks for the confirmation, guys. I hope we will earn a lot. We will definitely try. So let me add Arpit sir to the stage. Arpit sir, I hope you can hear me clearly. Hi Anuj. Hello Arpit sir, can you hear me? Yeah, your voice is audible. Great. No, your screen is not visible yet. Just a second. So meanwhile, let me start the session. Good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager here at Motilal Oswal, and I'm really happy to welcome you all for the Bank Nifty Expiry. The session in the morning focuses more around cash and afternoon focuses more on derivatives. We'll try to take stock queries, but our focus would be more around derivatives. And we have our Bank Nifty expert Arpit Dewal sir here with us, who will start with the market outlook and give us the strike on radar, and then we'll focus on the trade. Yeah. Very good afternoon, guys. Just before starting the session, my voice is audible. The screen is visible. Yes, sir. You are clearly audible and visible. Screen is great. Very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty weekly expiry play. So all in all, today, if we talk about Bank Nifty, it has been a subdued movement. एक रेंज में मोमेंटम है, बट अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें और निफ्टी देखें, रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस है. So as today is Bank Nifty, so first we'll focus on Bank Nifty. First we'll talk about the level wise. So if we see overall the weekly setup of Bank Nifty, from past almost 2 weeks, it was stuck in a range between 49,750 to on the upper end 50,700. लास्ट वीक हमने रेंज ब्रेकआउट देखा, बट एट द सेम टाइम वापस डेली स्केल पे पिछले 10 से 12 दिन में एक रेंज में फंस गया है. सो इमीडिएट बेसिस पे 50,250 का सपोर्ट है और अपर बैंड में 50,750 का हर्डल है. सो अगर आप चार्ट भी देखें, सो बैंक निफ्टी एक नीचे की तरफ एक रेंज में फंस गया हुआ है. मोमेंटम मिसिंग है. एज इफ वी सी स्टेप बाय स्टेप ऑल द हेवीवेट्स बैंक आल्सो, एचडीएफसी बैंक देयर इज नो मेजर मोमेंटम, आईसीआईसीआई बैंक देयर इज नो क्लियर मोमेंटम, कोटक if we see it's also stuck in a range comparatively. So all in all, अगर बैंक निफ्टी अगर सेटअप वाइज देखें तो एक दिन तेजी हुई, एक दिन मंदी हुई, फिर कल तेजी हुई, आज वापस मंदी हुई. सो एक zigzag रेंज में है, बट हमारा मोमेंटम अगर मोटो है कि अगर मोमेंट रहता है तो डेफिनेटली विल ट्राई टू प्ले सम स्विंग. सो इमीडिएट बेसिस फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द लेवल वाइज, ओवरऑल हमारा बायस थोड़ा पॉजिटिव है, बट फॉलो बाइंग नहीं आ रही है क्योंकि जनरल अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें, सो निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, बट बैंक निफ्टी एक लैक क्लस्टर रहा है. सो इमीडिएट बेसिस में बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 50,300. आई रिपीट, 50,300 एक सपोर्ट जोन है और अपर बैंड में 50,500 50,600 इज अ हर्डल जोन. सो 50,300 से लेके 50,500 50,550 एक हर्डल जोन है. ये आर्ली चार्ट है बैंक निफ्टी का. अगर आप देखोगे कल यहाँ से वी हैव सीन अ स्ट्रांग मोमेंटम फ्रॉम 50,400, बट एट द सेम टाइम आज फॉलो अप बाइंग नहीं है एंड मार्केट हैज बीन वेरी मच डल. ओवरऑल नेगेटिव बायस है क्योंकि बैंक निफ्टी में हेवीवेट्स थोड़े प्रेशर में है. सो रेंज वाइज में बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड्री है, नीचे 50,300 का सपोर्ट है, ऊपर 50,500 का है. मॉर्निंग में हमने एक दो बाय की तरफ ट्रेड प्ले किए थे, बट मेजर मूव नहीं हुए थे. एट द सेम टाइम नीचे की तरफ भी मोमेंटम मिसिंग है. So having said that, couple of strikes there are on radar for Bank Nifty. First, starting calling from the talking about 50,300 call on the Bank Nifty side and 50,500 put. ये दोनों हम कॉल पुट बैंक निफ्टी के ट्रैक कर रहे हैं बिकॉज राइट नाउ एग्जैक्टली बैंक निफ्टी एक मिड जोन में ट्रेड कर रहा है 50,400 के अराउंड, एंड सिंस ऑलमोस्ट लास्ट 1.5 hour it is trading in that range itself. So we are waiting for the setup.
इमीडिएट बेसिस पे जब तक 50,300 के ऊपर रहता है बैंक निफ्टी, हमारा बायस थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम विल आल्सो टॉक कि अगर बाई चांस फॉलो अप सेलिंग होती है 50,350 के नीचे तो ही हम स्टैंड चेंज करेंगे, बट एज ऑफ नाउ एक रेंज में फंसा हुआ है, सो वी हैव टू प्ले दिस रेंज। सो एज ऑफ नाउ 2 स्ट्राइक्स वी हैव मेंशन्ड टू कीप इट ऑन radar, 50,300 कॉल एंड 50,500 पुट, दिस बोथ द स्ट्राइक्स आर ऑन radar, विल अपडेट कि जैसे सेटअप बनता है तो हम प्लेइंग करेंगे। इमीडिएट बेसिस पे 50,300 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जब तक इसके ऊपर रहेगा हमारा हल्का बायस पॉजिटिव रहेगा। At the same time, there are multiple hurdles on the upside. So upside भी क्या है 50,500, 550, 50,600 क्या है। अगर हम अब निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में क्लियरली आउट परफॉर्मेंस है। इट इज बेयरली 1% बिलो इट्स ऑल टाइम हाई, 25,050 ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, और अभी खाली 300 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 53,500 एंड बैंक निफ्टी इज डाउन ऑलमोस्ट 6% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। सो निफ्टी में क्लियरली आउट परफॉर्मेंस है। इमीडिएट बेसिस पे 24,600 निफ्टी का सपोर्ट है, अपर में 24,800, 850 एक हर्डल जोन है। सो कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है, और सेटअप वाइज निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेनली बिकॉज ऑफ ऑटो, आईटी, पावर, एनर्जी, फार्मा, FMCG, so that is holding Nifty at higher levels. So coming back to बैंक निफ्टी लेवल्स में 50,300 और ऊपर में 50,500, 550 एक हर्डल जोन है। जब तक बैंक निफ्टी 50,300 के ऊपर रहता है, हमारा बायस थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मोमेंटम नहीं रहेगा सो हम कोई स्ट्रेटेजी के थ्रू पे करेंगे, बट विल अपडेट। इन द मीन टाइम अनुज वी कैन टॉक अबाउट फ्यू स्टॉक्स एंड फ्यू सेक्टर्स आल्सो, बिकॉज काफी अच्छा मोमेंटम है, सो वी कैन ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट एंड देन विल अपडेट। Sure, sir. Sir, KNR Construction buying at 367. 367. So अगर आप चार्ट देखें KNR Construction, the chart is visible, right Anuj? Sorry? The chart is visible of KNR Construction? Yes, it's visible. परफेक्ट। सो थोड़ा सा हमने ऊपर से फॉलोअप सेलिंग देखी है, एंड इमीडिएट बेसिस पे देखे तो डेली स्केल में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, बट अच्छी बात ये है कि जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था, हर्डल जोन था 320, वहां पे एक मेजर सपोर्ट जोन है। सो आई थिंक जो ऊपर का भाव आपने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं 320 के अराउंड, 320-22 वुड बी अ गुड एडिंग जोन, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 300। अपसाइड में एक बार थोड़ा अपसाइड कैप है, बट हमें बाउंस बैक मूव दिख सकता है अराउंड 350-360 तक का, तो 320 पे ऐड करें, 300 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर 350-360 के टारगेट के। Sir, Lupin 2120 call bought at 45. 2120. Okay, so if I see the setup wise, Lupin the chart setup is very strong. Pharma index में काफी strong momentum है, weekly monthly setup काफी strong है, daily scale पे fresh range breakout दे रहा है। हमारा व्यू रहेगा 2125. I'll repeat the level. Lupin 2125 के ऊपर क्लोजिंग आती है, so continue to hold that call because 7 से 8 दिन का कंसोलिडेशन है, और अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो हमें वापस 60 से 70 रुपए का मूवमेंट दिख सकता है। So 2140 का कॉल है, I would suggest continue to hold. 2125 की क्लोजिंग के ऊपर और कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, so continue to hold the call. Also, in the meantime, we have come up with flash rate on terminal also, KFin Tech. So that is a BTC idea first. KFin is right now trading around 1020. Support है इसका major 990 का, upside में 1100. So अगर setup wise भी देखें, monthly scale clear uptrend में है, weekly scale में consolidate करा at upper band, support बना लिया 980 के around. So KFin Tech is the first BTC idea. Buy in the zone of 1020 to 1030. स्टॉप लॉस आप रखें 990 का, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि रिलेटिवली हाई बीटा काउंटर है, और ऊपर हमें 1100 का मूव दिख सकता है। सो फर्स्ट बीटीसी आइडिया दैट वी फ्लैश ऑन द टर्मिनल आल्सो इज KFin Tech. सेटअप इज वेरी स्ट्रांग, सो डेफिनेटली गाइस यू कैन प्ले आउट दिस मूव, एंड काफी कंसोलिडेशन के बाद हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड आल्सो इज क्वाइट फेवरेबल. Also, I would like to add one more thing. As we have seen good momentum in stocks, so हमें टायर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है. उसी में हमारा टॉपिक है टायर स्टॉक्स में अपोलो टायर. सो अपोलो टायर अगर देखें तो परफेक्टली 200 डेमा से सपोर्ट लिया है, डेली स्केल पे रेंज ब्रेकआउट दिया है, वीकली को लोअर हाइस को नेगेशन किया है. सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है.
अपोलो टायर में भी हमारी बाई की सलाह रहेगी, 500 से 502 की रेंज में बाय कर सकते हैं, 485 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 530 535 के टारगेट। सर लेमन ट्री काफी समय बाद हमने देखा है चैट में। Lemon tree, if we see, we have seen quite a heavy fall in the last month, और नीचे से रिकवरी हमने अच्छी रिकवरी देखी है। सो आई वुड सजेस्ट, एक बार एक काउंटर रेंज में फंस गया है, वीकली स्केल पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, बट अब तक कंफर्मेशन नहीं है। सो आई थिंक अपर बैंड में 136 137 हर्डल जोन है, वहां पे आता है, वुड एडवाइज टू एग्जिट द स्टॉक, दैट वुड बी मच बेटर। नीचे सपोर्ट है 122 का, ऊपर 137 138 का हर्डल है। Coming back to just to Anuj, I to Bank Nifty. So I'm again revisiting the Bank Nifty also. So right now it is still trading between 350 50,350 to 50,500 levels. So हम लोग जो कॉल देख रहे थे 50,300 का, अभी भी 112 चल रहा है. So we'll update जैसे भी कोई लगता है चार्ट पे रिवर्सल है और यहाँ पे रिस्क रोड फेवरेबल है, so we'll update on it. Also ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट बाय करके there is no benefit because momentum is missing. So उसमें टाइम डीके के वजह से प्रीमियम are just eroding, and today we have seen lot of premium erode during the day also. So we have to be cautious on that because premium erode अगर हो गया so वापस follow up momentum build up करना काफी difficult रहता है. So level wise 50,350 is the support, upper में 50,500 600 is the hurdle zone. Yeah, so we can take a couple of stock queries also. BTS idea we have shared, KFin Tech. Sir, Reliance, your view on Reliance Industry. Yes. So overall, if you see Reliance Industry, generally the nature, the bigger trend of the stock is positive. I think from high levels, you've seen a decent correction of almost 7 to 8%, from 3,200 to 2,800, 2,900. So weekly scale, the risk reward is quite favorable. And I think slowly and steadily you can move again back towards 30,050, 3,100 levels. तो 3,000 की क्लोजिंग के ऊपर हमें 2 से 3% का अपमूव दिख सकता है. So weekly setup is positive है. So risk reward is favorable at current junction. Coming back to Bank Nifty, so we have seen some spurt in the premium. So definitely we'll now look at the opportunity also and look at the trade also. So what we can do is we'll look at the strikes 50,300 call and 50,400 call. So as our bias is relatively positive itself, so we are looking for the call side itself. So we'll look out for the trade for 50,300 call and 50,400 call. हम दोनों ही track कर रहे हैं. Let me open up the chart also. Let us see कि momentum कौन से strikes पे play कर सकते हैं. I'll just open 50,300 call. Yeah. So if I see 50,300 call, we have seen some uptick from 100 levels. And if I see 50,400, 84, and the low is around 40. So I think 50,400 we are tracking at 50,000. So हम क्या कर सकते हैं 50,300 call. Better will go with in the money, जिसमें आपकी probability high रहेगी. So 50,300 की call हमारी buy करने की सलाह रहेगी between 120 to 130. There's a reason I'm saying on dip because उसमें better रहेगा 120 से 130 की range में 50,300 call. Bank Nifty buying range will be between 120 to 130. Stop loss रहेगा 90 का. Upside में momentum 190 and 200 के लिए. So I'll repeat 50,300 call for Bank Nifty. Buying zone will be 120 to 130. And नीचे support रहेगा 90 का, upper band में 190 200. Or what we can do is, Anuj, we can shift to Bank Nifty 50,400 call also. So 50,400 call is right now quoting over 110 levels, 120, and we've seen a big spurt in the premium itself. So we'll wait for some dip in 50,400 call. I'll repeat, 50,400 call हमारी buy करने की सलाह रहेगी in between 90 to 100 levels. I'll repeat, 50,400 call Bank Nifty will buying zone between 90 to 100.
स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 50 का, अपसाइड मोमेंटम 155 175. I hope Anuj the strike is clear. Yes, sir, it's clear. Bank Nifty 5400 call, buy near 9200, stop loss 50, target 155 to 175. So as overall our bias is positive itself, and we have seen good uptick also. So I think better we would like to go with the call side itself, and we have seen good momentum. Rate अभी वापस ऊपर ही है 135 140, but moment काफी erratic है. That's why we have suggested to buy on dips. That would be much better. And moment अच्छा हमने नीचे से देखा है. So I think we'll wait for some dip, or else we'll change the strike. But as of now, 50,400 call, would advise to buy in the range of 90 to 100. Stop loss रहेगा 50 का, upside में 155 175 के target. Guys, I hope we both are clearly audible. You can write yes in the chat. So we've seen good momentum, and I think it didn't trigger to our buying price, and we've seen an uptake also, and there's huge spike in Bank Nifty. But that's the thing, because we were playing from the at the money and in the money, so that's why we were waiting for the dip, and we would still like to go with that stance itself. And the premiums movement are quite erratic, so we'll wait for a comfort level for 50,400 call in the range of 90 to 100. And as soon as we get that range, we'll definitely trigger a buy signal on the Bank Nifty call. In the meantime, Anuj, we can take few stock queries also, and then we can get back to the instrument. Sir, 50,400 में short covering देखने मिली है. OI decrease and premium increase. Yes, so that's it. Actually, we were looking out for the level of 50,500 call spot levels, and after almost 2 hours, you've seen a breakout. So that's why we were slightly biased positive itself, but momentum was missing. So that's why we attempted with the in the money call. And as rightly said, कि काफी shorts है system में, but as for the price action, we have to play with the price action, and we have to also keep risk management in mind, because we are dealing directly with the naked option buying. So that's why we are waiting for that comfort level. 50,400 का कॉल अभी 130 चल रहा है. हमारी बाइंग जोन है अराउंड 90 to 100. स्टॉप लॉस रहेगा 50 का, अपसाइड में 165 180 के मूव के लिए. So we are closely tracking premium also. Right now is quoting around 145 146. ऊपर में 175 तक हाई मारा है, and right now it's around 130 145 146 152. So our buying zone is around 90 to 100. Or we can do one more thing. We'll shuffle our buying zone a bit higher, so where we can get much more comfort. And a revised buying zone for 50,400 call, as earlier it was between 90 to 100, will revise in between 110 to 120. I'll repeat, 110 से 120 की रेंज में हमारी बाइंग जोन रहेगी बैंक निफ्टी के कॉल की. 110 से 120 की रेंज में स्टॉप लॉस रहेगा 75 का, अपर बैंड में 175 190 के टारगेट के लिए. So I'll repeat, 50,400 call, buying would be in between 110 to 120. स्टॉप लॉस रहेगा 75 का, अपर बैंड में 180 200 के टारगेट के. In the meantime, we have also shared one BTST that we have already shared, and we have flashed on terminal also. And few stock ideas that are looking quite good is first the Apollo Tyre itself. We already mentioned about that.
and along with that, insurance stocks are looking quite good. So I think there is one side momentum in Bank Nifty, and it didn't trigger a buying price. So let's wait for some dip. If it is not, then better we'll wait for some dip itself, because upper band mein chad ke the risk reward will not be favorable to buy the naked call. So I think there is one side momentum in Bank Nifty, but the premiums are just shooting up. $50,400 call has moved from around 130 to 200 now. So what else otherwise we can do? We can shift to the next side, because deep in the money will also create problems. So 50,500 right now is quoting around 110. So आप ये buy कर सकते हैं around 100 levels. 50,500 call, I'll repeat. अभी right now चल रहा है around 107, 108. ये आप 100 के range में buy कर सकते हैं. 60 का stop loss रख के ऊपर 130 और फिर 160 के target पे. So I'll again revise 50,500 call Bank Nifty. You can buy in around 100. Stop loss upper में 65, upper band में 165, 175 के लिए. So good momentum is seen in Bank Nifty, good recovery we have seen, and the price that we were expecting, it didn't trigger, but that still the trade is still, we have recommended a new trade 50,500, buying zone between 100 near 100 levels, stop loss रहेगा 65, upper band में 135, 160 के target के लिए. So 50,500 call has been triggered, Anuj. Right now it's around 105 levels. I hope my voice is audible. Yes, sir, you're clearly audible. Yeah, so 50,500 call has been triggered, and you have to maintain a stop loss of 65. I'll repeat, on upside move towards 135, 165 levels. The movements are very quick, very sharp, so play it accordingly, and that's why we have rotated the strike where we can get some comfort. And it is an in the money call, so that's why we have advantage, and we can hold it relatively. The first target is 130 and the second target is 160. Yes. काफी लोग हैं जो strikes समझने के बाद they are trading on their own. So guys, congratulations on your profits. There are many people जिन्होंने थोड़ा risk भी लिया है. That's really nice. That's commendable. We could provide the view, but we couldn't capitalize the strikes. But still, those who are able to play the move. So guys, also keep booking profits, because expiry play and the moment is erratic. So you have to keep that thing in mind. 50,500 का कॉल हमारा ट्रिगर हो गया था. फिर वापस अभी 105, 106 चल रहा है. 112, 113, 114 नीचे 95 का लो मारा था. अभी around 111, 112 है. So keep it churning quickly. Also keep rotating the strikes. That is very important. $113, $115, $116, $118. So in recent, just in couple of minutes back, it has made a high of 144. So वो एक टिक मारा था, अभी 115, 116 चल रहा है. ये लो मारा था 95. Now back to 122, 124, 127, 128. So I think we've seen good move of at least 25, 30 points. So guys, keep booking also and keep churning. That's very important. अगर आपने 10 slot लिए तो at least आपको 5 slot definitely book करना चाहिए. And rest आप 5 को trail कर सकते हैं. So I think it's better to book profits, because 15-20 point के swings काफी fast आ रहे हैं. So can we re-enter now?
If you have to re-enter, so again the buying zone will be between 90 to 100 itself. Stop loss at 65, same zone. और आप देखोगे the movement काफी quick है. As we were discussing also, we have seen a sharp momentum of almost 150 200 points in Bank Nifty, and so keep stop losses in mind. That's very important. Dip पे आ रहा है तभी आप अटेम्प्ट करें. अभी वापस 100 वाला 125 मारा, अभी 125 वाला वापस 108 हो गया है. So keep churning. Also keep stop losses in mind. That's very important because ये बैंक निफ्टी है, स्टेबल नहीं है और वोलेटिलिटी आप देखो 110 वाला वापस 80. So that is how the nature of the bank nifty is, but that is the beauty of bank nifty कि momentum भी रहता है, erratic moves भी रहेंगे, so we have to play it accordingly. The stop loss for this trade is 60. Yes. And we have seen one good churn in the trade. Vishal saying कि अब no more entry, once profit done, system closed down, अब सिर्फ observation and cold drink. That's really nice, and that's quite a professional approach. So that's ideally that's the case when in option buying, because that's very important to preserve the profits also once you have done it. So आपको profits preserve करना भी बहुत important है. So now from 82 now back to 100, 105, 125. So that's the nature of Bank Nifty, and that's how Bank Nifty is known for. Relatively since morning we had a quite a dull session. So but वापस देखिए आप 100 वाला 120, 100 वाला 120 हो गया. So वापस आपको चर्निंग मिल गई 122, 127. So अगर किसी ने वापस 100 पे लिया है, so definitely one can book profits back अगर 123 and can close the positions. हमारा first target hit हो गया है for the people who are still holding their partial trades and lots. Yes, so I think this over here, I think we should close out our trade because good churning we have seen of twice in spite of sharp up move, and I think जो profits लिए हैं उसको preserve करना बहुत important है. And coming back to the overall market view also, Nifty is outperforming as we can clearly see. Stock specific action is quite good. So overall tire stocks, insurance space, selective pharma companies are looking good. KFin Tech हमने already BTSC share किया है. Also check the chart also how it is doing because setup wise काफी strong है, positionally काफी अच्छा है, immediate basis पे भी हमें 3 से 4% का move दिखना चाहिए. So overall setup wise it's very strong. बैंक की जो trade हमने दिया था अभी भी 122 123 चल रहा है. So we would advise to lock in the profits at this level, and tomorrow we'll have Nifty expiry. So I think that would be good for Nifty also. मतलब Nifty is relatively outperforming, and we can watch out for Nifty trades tomorrow. In the meantime, 2 trades we have shared, KFin, and apart from that, Apollo Tire from the auto space is very looking good, and the entire insurance space. Insurance space is quite HDFC Life, ICICI Pru is looking very, very strong from a 8 to 10 days perspective. So that's the say from the stock and stock specific wise. We can take a couple of queries of Anuj. Anything is there according. So queries तो बहुत सारी है, but apparently time नहीं है. I can see people yes. asking but I queries think and we've also seen good momentum in Bank Nifty. I think at least people would have able to play it out to some extent. Chanduji bought at 85, sold at 132, made 42k, biggest profit in 2 weeks. Congratulations, Chanduji. It's great to see कि people खुद से थोड़ा सा risk ले रहे हैं. They are churning on their own. We don't need to tell कि कब buy करना है, कब exit करना है. They are using their own analysis on top of our experts' analysis. Sir, thank you. Book 15k. Good movement in call. Good conviction, sir. Dinesh ji ka 40,000, 5,400 call jackpot. Dev ji is sending rockets. So reached 150 now. I guess it's almost a second target for the people who are holding. It's is the suggestion of expert. Please book your profits and exit the trade. Being too greedy is also a pretty risky thing. जैसा कि हम हर सेशन में बोलते हैं कि trading in control is very important. जैसा विशाल जी ने भी बोला अभी. So I guess that will be also. We have already shared the BTST. We have already shared the trade. We have made a good profit in it.
So last one announcement that we have our mini silver expiry today at 6 p.m. So don't forget to join in. Thank you everyone. Thank you Arpit sir. Thank you all.